Hello and welcome to Ambivert Aish. I am Aishi Jain, your instructor. अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, then let me inform you that we talk about personal development, effective communication, and public speaking on this channel. I also have a podcast called Convo with Aish, जहाँ पे हम बहुत से interesting guests से बहुत ही interesting convos करते हैं, which are very much valuable again into the same niche of personal development. Now, आज हम बात करने वाले हैं 7 C's of effective communication. This is a new series that we are starting, जिसमें हम effective communication के सारे aspects, techniques, practices और बहुत सी fun exercises को include करने वाले हैं. And this is the first video of the series, 7 C's of effective communication. So let's start. All right. So these are the 7 C's of effective communication. Let's have an overview first, then we will dive deeper. पहला क्लियर, ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक आपकी बात सामने वाले को समझ नहीं आ रही है कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है. सेकंड, कंसाइज. थर्ड, कंप्लीट. फोर्थ, कर्टियस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस मिस दिस. फिफ्थ, कॉम्प्रिहेंसिबल. सिक्स्थ, कॉन्क्रीट. सेवेंथ, करेक्ट. अब देखते हैं कि ये एस्पेक्ट्स कैसे हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं एंड हाउ कैन वी यूज देम टू आवर एडवांटेज. Let's begin. Also, if you haven't subscribed to my channel till now, please do it now because there's a lot of variety of content that is gonna come up. So yeah, stay tuned. All right. So clear how. Clear goal in simple words. ऐसा हुआ है कभी कि suppose your mother or your father have told you to bring something from the kitchen, पर उनके instructions इतने vague हैं कि आप 10 मिनट से ढूंढ रहे हैं पर आपको चीज नहीं मिलेगी. This is an example of ineffective communication. आपको जो भी instructions दिए जा रहे हैं, they should be clear and to the point. एक और बहुत ही common problem आती है कि हम लोग इतना ज्यादा consumed है to have a very hi-fi and fancy vocabulary कि हम भूल जाते हैं that we as a core has a goal to put across a point कि सामने वाले को समझ में आए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं. बट क्योंकि हम बहुत hi-fi words यूज करते हैं, अक्सर ऐसा होता है that the person who is not up to that caliber of vocabulary is not able to understand. And I have been guilty of this mistake. So please avoid this. Your communication should be clear, to the point, simple words, and according to the caliber of the listener. Most important. सामने वाले को जितना समझ में आएगा उसके हिसाब से ही आपको अपनी vocabulary set करनी चाहिए. And this obviously comes with practice. But if you look at the professionals, the corporates, they practice this very effectively. So this is number one, clear. यानी कि हमें simple words, simple sentences use करना है, and we can use hi-fi vocabulary according to the caliber of the listener. Number two, concise. First of all, what do you mean by concise? Being precise to the point. अब बहुत से लोगों को आदत होती है कि घुमा फिरा के बहुत बात करनी. उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए थे, वो शुरू से अपनी पूरी कहानी बताएंगे. नाउ स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, लेकिन इसको आपको हर जगह अप्लाई नहीं करना है. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको बहुत प्रिसाइज होना चाहिए. वाई यू आर देयर, वॉट यू पुट अक्रॉस, वॉट यू ब्रिंग टू द टेबल, एंड हाउ कैन यू बेनिफिट देम. ज्यादातर लोगों को सिर्फ इतना जानना होता है कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं या फिर वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं इफ दे आर अ सर्विस प्रोवाइडर. प्लीज बी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, एंड अवॉइड फिलर्स. फिलर्स मीन्स आधे से ज्यादा टाइम इसी में चला जाता है. नाउ fillers can be used in a practical and positive way also, which you can get to learn if you get into the community and get into the advanced courses with me or with any of the coaches. They will teach you कि filler words को भी आप एक ऐसे तरीके से यूज कर सकते हैं कि वो obstruct ना करे आपकी communication को बल्कि enhance करे. And this includes pauses and intonation as well. Okay, so concise होने का basic मतलब है कि आपको to the point होना है उतने ही वर्ड्स में. बेसिकली इट्स द ट्रेट कि बहुत से लोग होते हैं जो एकदम काम की बात करते हैं, दे गेट द टास्क डन एंड दे आर आउट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली इन द प्रोफेशनल एनवायरमेंट. Why else? Convey the message with least possible words. Again, exactly what I said. बहुत सी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे कॉज कंफ्यूजन.
सो प्लीज बी प्रिसाइज टू द पॉइंट और उतना ही बताओ जितना सुनने की इंसान को जरूरत है. लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग आउट और वी डू एनीथिंग, तो आपका ट्रेनर आपको स्टार्टिंग में उतना ही बताएगा जितना आप हैंडल कर सकते हो, जितना आपको जरूरी है, एंड देन स्लोली यू टेक योर वे फॉरवर्ड. सेम इज विथ कम्युनिकेशन. नाउ थर्ड इफेक्टिव सी इज कंप्लीट. बहुत मैंने देखा है कि लोग, एक तो अटेंशन स्पैन की वजह से, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स जिसकी वजह से लोग इनकम्प्लीट बातें करते हैं. अगेन कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि क्लियर क्यों नहीं है, क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि यू आर विथ होल्डिंग समथिंग. आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो सामने वाले को, जिसकी वजह से टास्क नहीं हो पा रहा. अगेन ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बहुत होता है कि यू आर नॉट एबल टू पुट अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स जिन चीजों का ध्यान रखने की लोगों को जरूरत है. हैंस द टास्क इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू यू. तो आपका कम्युनिकेशन शुड प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. जो भी चीज आप बोलना चाह रहे हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन. अगेन गर्ल्स आर वेरी गिल्टी ऑफ इट. लाइक जो मीम्स बनते हैं कि गर्ल्स को समझना बहुत मुश्किल है, दैट इज बिकॉज इट्स लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन. आप अपने इमोशंस को पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हो टू योर पार्टनर, टू योर पेरेंट्स, टू योर फ्रेंड्स, जिसकी वजह से स्टिग्मा आई वुड से स्टिक टू द गर्ल्स, दैट इट्स impossible to understand girls, but the real reason is ineffective communication. So do not leave out anything. Be complete, be precise. अपने पूरे जितने भी इमोशंस है, जितने भी पॉइंटर्स हैं इन माइंड, चाहे ये पर्सनल कम्युनिकेशन है या प्रोफेशनल है, यू हैव टू पुट अक्रॉस द कंप्लीट सिनेरियो, ताकि सामने वाला अज्यूम या गेस ना करते रह जाए कि ये बोलना क्या चाह रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ अगेन द नेक्स्ट वन इज courteous. आप कितने भी प्रिसाइसली, कितने भी क्लियरली, कितने भी कंसाइज इन्फो के साथ अपनी बात रखें, इट विल बी पॉइंटलेस इफ यू आर नॉट courteous. courteous मतलब क्या? Your words and body language should be polite. Now see very carefully. Not only words but body language should also be polite. क्योंकि अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है, the people get the hint. And very key point, avoid harsh sarcasm. बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मजाक उड़ाने की आदत. Now it's a way of being humorous, funny, लेकिन हर चीज की एक लिमिट सेट होनी चाहिए. There should be a way to put across sarcasm in a positive way. Again, this is a way of effective communication which you can learn by enrolling into high level courses, जिससे आप ये बहुत अच्छे से सीख पाएंगे. Right now we are covering the basics of communication, effective communication. So पोलाइट मीन्स वी ऑलरेडी डू दिस. स्कूल से हमको ये सिखाया गया है मोरल साइंसेस में, दैट यू शुड ग्रीट द पर्सन you're meeting, you should be having the eye contact, you should be smiling when you're seeing the person, because of course body language comprises the most of the part of your communication. Non-verbal communication जो होता है, it is more important than the verbal communication. It's a proven fact. So avoid sarcasm, be courteous, be polite, be humble, and use the traditional trademark works. Excuse me, please, I'm sorry. So it's good कि अगर आपका कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ भी है, take responsibility, understand it, and use the polite words. This will help you a lot in the long term. Next is comprehensible. Comprehensible का मतलब हुआ should be understandable. आप, अब अगर आपसे कोई स्पेनिश में बात करे और आपको स्पेनिश नहीं आती है, तो वो कितनी ही अच्छी लैंग्वेज में क्यों ना बोल रहा, इट्स ऑफ नो यूज टू यू. सो आपको जो भी आप बताना चाह रहे हो या जो भी आप सुन रहे हो, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. नाउ दिस वर्क्स बोथ वेज. चाहे आप बोल रहे हो, यू आर द स्पीकर और यू आर द रिसीवर, दोनों ही तरफ से कॉम्प्रिहेंसिबल पार्ट प्ले करता है. पहला कैसे? देयर शुड बी सम लॉजिक. जो आप बोल रहे हो उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई तुक बनना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि बिना सिर पैर की कोई भी बातें कर रहे हैं. इट्स ऑब्वियसली अ मेजर टर्न ऑफ इन ईच एंड एवरी सिनेरियो दैट यू कम इनटू. अगर आप देख रहे हो कि कोई भी पर्सन आता है, आप उससे कुछ बात करें और वो भलता ही कुछ नया टॉपिक निकाल के बीच में कुछ भी बोल रहा है, यू विल नेवर वांट टू टॉक टू दैट पर्सन एवर. आप दूर से ही देख के भाग जाओगे कि यार इससे कुछ बात करो, ये बोलता कुछ और ही है. सो यू विल नेवर टॉक टू पीपल लाइक दैट. So do not be that person. So there should be logic in whatever you say, and please practice empathetic listening. Empathetic listening क्या है? कि हमें सुनना है to understand. सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, हमें समझने के लिए पहले सुनना है, and we should go for the emotions.
वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सामने वाला बोल रहा है वो किस स्टेट में है. अगर वो बहुत अर्जेंसी में है, यू कैन स्टॉप योर टास्क एंड फोकस ऑन द पर्सन फर्स्ट. इफ इट्स अ वेरी बिचिंग मोड, देन यू कैन इग्नोर एंड मूव ऑन विथ योर मोर इम्पोर्टेंट टास्क. सो प्रैक्टिस एम्पैथेटिक लिसनिंग. आपको पता होना चाहिए कि कब किस इंसान को कितना अटेंशन देना इंपॉर्टेंट है. दैट्स अ मेजर लेसन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट नंबर 6 इज कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट मतलब होता है जोरदार, जबरदस्त, जिसे हिलाया नहीं जा सकता. Okay, so data should be specific and factual. Most of the public speakers start with this. They start with the data that grabs the attention of their audience. तो अगर आपका data ही गलत है, then you will never connect with the person you're talking to. So please be specific with whatever you're sharing, especially if you're in the higher position. There should be logic again, and message should be credible, backed with facts. इसका क्या मतलब है? क्रेडिबल मीन्स कि आपकी बात रिलायबल होनी चाहिए. सपोज एक इंसिडेंट हुआ कि समवन टोल्ड यू समथिंग दैट यार ये ऐसा ऐसा होता है, दिस टेक्निक इफ यू फॉलो इट विल वर्क. एंड थोड़ी देर बाद आपको ये एक्चुअली डाइट के साथ बहुत ज्यादा होता है कि फैक्ट्स आर वेरी मिक्सड अप. एंड थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि जो आप फॉलो कर रहे हो दैट इज एक्चुअली रॉन्ग. जो डेटा आपको बताया गया दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट. सो दिस शुड नेवर हैपन इफ यू आर द डिलीवरिंग पर्सन. अगर आप किसी को कोई चीज बता रहे हो, इफ यू आर putting forward any knowledge, it should be correct. For example, I'm telling you the 7 C's of communication. So it's a fact, it's factual, it's backed with science and data कि ये चीजें अगर आप फॉलो करोगे आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा. अब अगर यही गलत होता, then there's no point in putting across this video. So your communication, your sentences, your knowledge should be always backed with facts and must have details to support your data. For example, like again, if I'm going to support this data, तो क्या होगा? I can choose any celebrity, any public speaker. उनका कोई भी वीडियो उठा के if I show to you, whether it is Shahrukh Khan, Priyanka Chopra or national international level Josh Talk TEDx speakers, उन सबकी स्पीकिंग में आपको ये 7 फैक्टर्स मिलेंगे ही मिलेंगे. If you're doubtful, go check it out and do let me know your views on this. Do comment. Now, last but not the least is correct. What do I mean by correct? कि आपका ग्रामर सही होना चाहिए. लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर और मैटर हियर. आप हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में आपका व्याकरण सही होना चाहिए. इंग्लिश में बोल रहे हैं, आपका ग्रामर सही होना चाहिए. इफ यू आर डूइंग रिटन कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल्स है, लेटर्स है, और इट्स अ पोर्टफोलियो, इट्स अ रेज्यूमे, तो आपके प्लेसमेंट्स, एक तो वी विल कम टू दैट. फर्स्ट, स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, पंक्चुएशन करेक्ट होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कॉमा यूज करना है, कहाँ फुल स्टॉप यूज करना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन यूज करना है. एंड इफ यू आर डूइंग ईमेल्स, तो आपके प्रॉपर फॉर्मेट होने चाहिए. यू शुड हैव अ सेट फॉर्मेट टू फॉलो एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर फ्लो. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हम कर सकते हैं क्या ईमेल्स में कि पहले रिगार्ड्स लिख दिया, फिर हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर कुछ बात कर दी, एंड एंड में हम बोल रहे हैं हेलो और गुड मॉर्निंग. No, there's a proper format, there's a proper flow to each and everything. Again, to the people who are approaching people on Instagram, आजकल it's a trend that we do use Instagram, LinkedIn for professional purposes as well. तो आप अगर सीधे अपनी कोई बात रख दोगे, it's unprofessional. अगर आप सीधे end point की बात कर रहे हो, then again the effective communication is not been placed. There's a proper flow to everything. First you approach the person, you greet them, hello, hi, or if it's personal, then there could be different words. Then you let them know that you like their content. या आपका intention क्या है with the way you are approaching the person. So there should be a proper flow. चाहे ये direct communication है, या ये written communication है, or it's a communication on your social media. So हर जगह पर यही 7 C's of effective communication use होते हैं. Now, if you have any kind of doubt related to any of this, please comment right now. Pause it, एक overview ले लें कि हमारे communication में क्या missing है, and then you can ask me that okay, I understood the topic, how I can implement this. So जो भी question ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में first strike कर रहा है, comment it down and I will give you the answer to it. If you want to learn this in a more advanced way, then please check out the description and you can enroll into my 21 days challenge where I will be covering all of this in even more depth and density. Also with a lot of interactive skills, and you will get the accountability of the community as well. I hope that you found this video useful.
If yes, then please hit like and share it with the friends who really need to have better communication skills. And I know there's a lot of them. There are a lot of people who think they are a good communicator, but they're actually not. I will tell you which point. Everything comes down to practicing empathetic listening. बहुत से लोग हो सकते हैं who are a good speaker, but communicator वो होगा जिसकी speaking और listening दोनों ही skills अच्छी हैं. So do let me know how did you feel about this video और कौन से topics हैं जो आप मुझे cover करते हुए देखना चाहते हैं. So I would see you in the next video with the traits that we need to have along with the 7 C's of effective communication. कि ऐसे कौन से traits हैं जो हमें apply करने चाहिए which will double X our power of communication. So until next time, keep growing, keep learning, and keep collaborating. Love, love. Nos vemos.